Hi everyone, welcome back to the second part of the quiz on medieval India. We will be taking up one of the most prolific emperors of medieval India, Emperor Akbar, today. We'll be talking about his reign and his history and everything that was material at that point in time. And if anyone has seen the film जोधा अकबर, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म थी, तो इनमें से काफ़ी चीज़ें यू विल रिमेंबर और दे विल सॉर्ट ऑफ रिंग अ बेल. तो अगर नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर. इट्स क्वाइट नाइस. ऑल राइट, सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन. द first question: where was Jalaluddin crowned emperor? Options were Kalnor, Jaipur, Delhi, and none of the above. The correct answer to this, now before we answer this question, it's important for you to know that the term Jalaluddin has been used here because that is how Emperor Akbar or Akbar was known before he became emperor. He was born at Amarkot in the palace of the Rajput ruler Veer Sal. His mother was Hamita Bano Begum. His tutor was Abdul Latif, and he was crowned at the age of 13, and the crowning was done by Mirza Abdul Qasim, and the correct answer is Kalnor. His guardian was Bairam Khan, and as you will see as we go along, Bairam Khan का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था अकबर के किंग तब्दील होने में. यानी कि देयर वाज वन coronation is one thing, but to actually take up that leadership role is another thing, and that is why it in fact referred to the film at the beginning. If you see, you will see that transition and how the roles of the people around Akbar changed as well. The second question: what was the Jalali? Options are coins, architectural style, food, or clothing. The correct answer is coins. They were square shaped silver coins, तो इन्हें जलाली कहते थे. इसी तरह से find out what the gold coins were called and then you can post that in the comments. तो उस ज़माने के जो gold coins थे जो इशू किए गए थे उनको क्या कहते थे? That's a bit of homework for you. There was another small coin which was a dam, and it was also called पैसा और फुलूस. तो ये भी इस्तेमाल किया जाता था. The next question: what was the jizya? Options: prayer, tax, pilgrimage, none of the above. The correct answer here is B. And what you do need to remember about jizya is that it has remained quite controversial, or its interpretation has remained quite controversial. Of course, each interpreting it to suit their approaches to history. But what you do need to understand is that at Akbar's time, jizya was abolished, and it was very similar to a poll tax or an income tax. और ये जो था ये जो लोग देते थे उस ज़माने में धिम्मी, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको ये टैक्स देना पड़ता था. अमूमन इसको ये माना जाता था कि इट वाज अ टैक्स बीइंग पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स टू द मुस्लिम रूलर who offered them protection in exchange of this particular tax. So simply put, that's how you can understand it. But at Akbar's time, this was abolished. Question 4: Fatehpur Sikri came into the spotlight in Akbar's reign because, और इसमें आपके options हैं, it was made the capital, and the second is the इबादत खाना was established there, और C and D तो आप देख ही रहे हैं. इसमें दोनों ही सही हैं. C is the right answer. एंड ये जो इबादत खाने की यहाँ बात हो रही है, बेसिकली इसमें इनिशियल डिस्कशंस होते थे जिसमें कि मुस्लिम थियोलॉजियंस पार्ट लेते थे, लेकिन आगे जाके इट वाज ओपन टू ऑल रिलीजन्स, एंड देयर वर सेवरल इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दीज डिस्कशंस, एंड it was all about questions involving questions of spirituality, religion, etc. So we will be talking about some of those scholars as we go along. Question 5: हेमू played a key role in, और इसमें आपसे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बैटल ऑफ सिंध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ पानीपत, नन ऑफ द अबव.
सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ सी है, बैटल ऑफ पानीपत। बेसिकली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था, और इसमें जो आपका एरिया था, आप समझिए काफ़ी एरिया बंगाल बॉर्डर तक वो आदिल शाह के अंडर में था. वॉज द नेव्यू ऑफ शेर शाह सूरी, and it was Adil Shah who had appointed Hemu as the Wazir, and he gave him the title of Vikramjit, because Hemu had not lost any one of 22 battles that he had fought, and that is why he was entrusted with the responsibility of defeating the Mughals. अब हेमू की अगर बात करें तो he managed to capture Agra and he was marching towards Delhi. He defeated the Mughals, but before he could proceed, Bairam Khan retaliated and Hemu was defeated. So that is how this role was played by Hemu. और इनफैक्ट बैरम ख़ान की हमने शुरू में भी बात की थी, तो आपको ये बता दें कि 1556 से जो 1560 का टाइम पीरियड था, हालांकि आजकल डेट्स पे या ईयर्स पे उतना फोकस नहीं है, बट फिर भी आप ये जान लें कि ये जो पीरियड था, दिस वाज कॉल्ड द पीरियड ऑफ बैरम खान्स रीजेंसी. एंड जो बैरम खान थे उनके साथ भी अकबर के रिलेशंस दे स्टार्टेड ऑफ वेल, बट इट जस्ट वेंट डाउन हिल आफ्टर अ पॉइंट. एंड ये जो बैरम खान की रिजेंसी का आप पीरियड सुन रहे हैं, तो वो इसीलिए था बिकॉज बैरम खान वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ मैनी ऑफ द political and military decisions that were being taken at that point in time. But interestingly, there was a woman behind this all who was playing a major role at this time, and that brings us to the next question. So the question is, who called the period between 1560 to 62 as the petticoat government? Your options are Max Muller, Vincent Smith, James Prinsep, and none of the above. Before I come to the answer, I'm going to tell you about this term itself and what its connotation is. तो basically ये जो term है, पेटीकोट गवर्नमेंट टर्म इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस टाइम पीरियड में महामंगा, who was the nurse and a foster mother of sorts to Akbar, she was the one who was behind major political and state decisions, and ऐसा portrayal था कि Akbar was at the forefront but he was actually a puppet to Mahamanga. Or Mahamanga was a strong woman. If you would see the film, you would see what her role was. Basically she had her own son Adam Khan, और काफ़ी डिसीजंस या काफ़ी जो वो पॉलिसी उस टाइम रेगुलेट कर रही थी, या जो भी आप कह सकते हैं शतरंज का खेल चल रहा था सियासत में उस टाइम, वो आदम खान को ध्यान में रखते हुए था, उनको आगे बढ़ाने के लिए था. और कहानी कुछ यूँ जाती है कि एक बार आदम खान ऑफ कोर्स वाज नॉट फिट टू रूल, एंड आफ्टर अ पॉइंट उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अकबर उनसे इतना नाराज़ हुए कि ही ऑर्डर्ड फॉर हिज इमीडिएट एग्जीक्यूशन by making him fall, or pushing him down from a ledge, from a height, और मान लीजिए टेरेस की हाइट से उनको नीचे फेंका गया. पहली बार में आदम खान नहीं मरे तो उनको दोबारा ऊपर लाया गया और फिर उन्हें नीचे फेंका गया. एंड अकबर शोइंग दैट लेवल ऑफ strictness sort of conveys the seriousness of what had been done by Adam Khan. So that's where that story ended. This term itself, petticoat government, being used, like I said, because a woman was running it, it's a bit controversial, but Vincent Smith was the one who brought this into the picture. Question 7, what is correct about हरका बाई? ऑप्शंस हैं जोधा बाई भी उन्हें कहा जाता था, बी डॉटर ऑफ राजा भारमल. तो इसमें अगर आपने पढ़ा हो इस बारे में, काफ़ी मशहूर कहानी है, कहानी क्या मतलब हिस्ट्री है, तो इसमें सी सही जवाब है. दोनों ही चीज़ें सही हैं. 1562 में जो भारमल थे वॉज द रूलर ऑफ आमेर. ही केम टू अकबर्स कोर्ट एट आगरा एंड ही मैरिड हिज डॉटर हरका बाई विद अकबर. हालांकि आप देखेंगे कि कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये हरका बाई ही जोधा बाई नहीं थी. उनका कहना है कि ये किसी और नाम से जानी जाती थी, बट सफाइज टू से वील गो बाय द प्रिजम्पशन ए और बी दोनों ही सही हैं.
क्वेश्चन 8, सम इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। अब इसमें हमने आपको इबादत खाने के बारे में बताया था, तो उसमें भी ये लोग पढ़ते थे और उसके अलावा भी इनसे ओपिनियंस लिए जाते थे। तो पुरुषोत्तम दास, दस्तूर महर्जी राणा, हरि विजय सूरी और फादर मोन्सेराट सभी सही हैं। इनके अलावा अकबर ऑल्सो कंसल्टेड जैन स्कॉलर जिनचंद सूरी। पुरुषोत्तम das, was consulted on matters involving Hinduism. दस्तूर महर्जी राणा को पारसीज के बारे में, हरि विजय सूरी जैन स्कॉलर, और फादर मॉन्सेराट जो थे, और एक्वा वीवा, ये सब कैथोलिक क्रिश्चियंस। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ इनफॉलिबिलिटी अकबर टुक टू। आपके ऑप्शंस धिम्मी, शरीयत, महजार, नन ऑफ द अबव। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इनफॉलिबिलिटी की बात हो रही है, ये एक्चुअली महजार था। अब या महजार जिसे आप कह सकते हैं। 1579 में दिस वाज पास्ड एंड दिस वाज erroneously called the doctrine of infallibility by Vincent Smith, but a lot of colonial historians have in fact gone on to call it a monument of Akbar's folly. रीज़न ये था कि हर मैटर ऐसा माना गया, अकबर ने कहा कि इट सिंपली इम्प्लाइड दैट ऑन ऑल मैटर्स विच आर नॉट डिस्कस्ड इन द होली कुरान एंड द शरीयत एंड वेयर उलेमास डू नॉट हैव कंसेंसस, अकबर वुड डिसाइड। एंड अकबर वुड, ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इमाम आदिल, और डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया। शेख मुबारक जो कि अबुल फजल और फैज़ी के पिता थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। और ये डिक्री वॉज मेनली एम टू एंड द इंटरफेरेंस बाय द उलेमा लेड बाय अब्दुल नबी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दीज काइंड्स ऑफ मैटर्स टर्न प्रिटी सेंसिटिव एंड कैन ऑल्सो टर्न पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स, और अकबर के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन 10, तौहीद इलाही। दिस हैज़ बीन मेंशन्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं बीरबल, एक्वा वीवा, अबुल फजल, नन ऑफ द अबव। तो तौहीद इलाही को बाद में जाके जाना गया दीन इलाही के नाम से अराउंड 1582 में, और अबुल फजल ने इसका नाम लिया था। इट वाज बेस्ड ऑन टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यही जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह का वे ऑफ लाइफ बताया जा रहा था। एंड संडे वाज फिक्स्ड एज द डे ऑफ इनिशिएशन बाय अकबर, बट एज इट टर्न्ड आउट ओनली अकबर, बीरबल एंड फैज़ी जॉइंड इट। इसका जो फिलॉसफी था वो सुलह कुल का था, पीस बी विद ऑल, एंड दिस probably should be something that everyone should be looking into more deeply. Now for good luck we go to question 11. एक और सवाल है, अकबर डोनेटेड लैंड टू, आपके ऑप्शंस हैं गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु हर राय एंड नन ऑफ द अबव। इसका भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। गुरु रामदास को अकबर ने ये लैंड दिया था 1577 में, और आगे जाके इट डेवलप्ड इनटू अमृतसर वेयर द फेमस गोल्डन टेम्पल नाउ स्टैंड्स, and the foundation of Harmandir Sahib was laid by the Sufi saint Mian Mir at the request of Guru Arjan Dev. अकबर के बारे में कुछ और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दें। उनका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उसे नेशनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा गया, बिकॉज इट प्रेजेंटेड अ सिंथेसिस ऑफ मेजर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। So all in all, based on the quiz today, you would have seen that there is so much to know and so much more to know about Akbar. तो अगर आपको भी कुछ interesting facets पता हैं उनके reign के बारे में, उनकी personality के बारे में, do share them. Thank you. Keep studying. Stay healthy. Stay safe.